$472 billion worth of lithium found in Jammu and Kashmir. Will India become a bigger manufacturer hub than China? Let's start from the beginning and understand what is lithium and why it is important. लिथियम एक मेटल होते हैं जिनका इस्तेमाल फिलहाल मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स में किया जाता है एंड बिगेस्ट अपकमिंग यूज केस इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरीज. नाउ व्हाई इज दिस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट? द क्वालिटी डिस्कवर्ड इज ह्यूज बाय एनी स्टैंडर्ड. It takes users from almost zero lithium reserves to 6 largest reserves in the world. Most importantly, करंट रिजर्व सबसे ज्यादा साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है जैसे बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली, which do not have the technology infrastructure to mine and refine lithium. अब इस पिक्चर में एंट्री होती है यहाँ चाइना की. China holds 60% of refining capacity globally, so majority of lithium is refined in China, and then Chinese EV makers like BYD Motors holding 20% market share in EV globally, and mobile manufacturers use this lithium in their products. With India holding such massive lithium reserves, the balance would tilt in India's favor. ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि we would be able to develop lithium refining technology and take the world by storm. पर यहाँ पर कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है. ये रिजर्व कैलकुलेशन अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है और इसको ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद ही सही पिक्चर का पता लगेगा. लिथियम रिजर्व्स होने के बावजूद इंडिया स्टिल नीड्स टू डेवलप रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी. But this might be a watershed moment for India's manufacturing. Now, do you think that the next decade definitely belongs to India, and can we create a space for ourselves in manufacturing? Also, let us know which Indian EV companies should be invited by the Indian government to help solve the technology problem. Comment section पर आकर इनका जवाब दीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. Thanks for watching. Stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.